बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तमाम रिसर्चर्स को टी टेस्ट के बारे में अवेयरनेस देना चाहता हूँ। टी टेस्ट विद टू ग्रुप्स और दिस वन इज द स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल और दिस सरफराज स्टैट्स लेक्चर नंबर 5। मेरा नाम सरफराज और रहमान है। I did PhD in parasitology or this lecture is in Urdu language, and I will also make the same lecture in English language so that the both researchers can get the benefit from this lecture. So ये टी टेस्ट जो है following references are used to make this lecture. Number 1 is Design and Analysis of Experiments, 8th edition by Douglas C. Montgomery, and this other is the website link, and last one is the internet sources. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। टी टेस्ट मुख्तलिफ कंडीशंस और मुख्तलिफ रिसर्च डेटे की बेस पे मुख्तलिफ तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं तमाम रिसर्चर्स को मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ और इसके अलावा उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टू ग्रुप्स के लिए जो टी टेस्ट है उसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। और ये जो स्टूडेंट टी टेस्ट है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टी टेस्ट क्या होता है। तो टी टेस्ट, a test is a statistical test that is used to compare the means of two groups. Actually इसमें ये देखा जाता है कि जो दो ग्रुप्स का जो मीन है उसको कंपेयर किया जाता है कि उस मीन में क्या आउटकम आई। It is often used in hypothesis testing to determine whether a process or treatment actually has an effect on the population of interest, or whether two groups are different from one another. अब इसमें एक्चुअली ये भी फाइंड आउट किया जाता है कि एक जो रिसर्चर जिसने एक हाइपोथेसिस बनाया उसने दो फॉर्म पर ट्रीटमेंट की या कोई फीड दी और वो एक हाइपोथेसिस बनाता है कि इस ट्रीटमेंट का इफेक्ट होता है, तो उस सूरत में टी टेस्ट लगाते हैं। अब किन कंडीशंस में टी टेस्ट जो है अप्लाई किया जाता है। नंबर 1 इज द नंबर ऑफ सैंपल लेस देन 30 और इक्वल टू 30। Number 2, the standard deviation should be known and the groups single or two. तो अगर 3 ग्रुप्स हैं तो आप टी टेस्ट नहीं लगा सकते। तो ये कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे एक जो रिसर्चर है वो डिसाइड कर सकता है कि उसको टी टेस्ट लगाना है। नेक्स्ट, अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत समझाना चाहता हूं कि this one is the statement at two cattle farms. The researcher makes a hypothesis. He provides two types of ration at one cattle farm, and then B ration that provide to another cattle farm, and now he would like to see the outcomes in the form of milk production. So this is the parameters, and you can see in this parameters that this one is the sample mean 5.50. This is the ration in condition of ration A,
और दूसरी जो कंडीशन है ऑप्शन बी 6.80. This is the standard deviation. If it is in the square, then it is the variance. So the variance 0.206, 0.379, n is 18, other n is 20, and n means the number of samples or the number of cows, and this one is the total mean and total values 99 and 136, and the other is that y2 that 548 or 932. So this is the actually outcome of the milk production. So these are the symbols that the population size is denoted by n, sample mean this y bar, population mean mu, standard deviation sigma, and variance sigma square, and the groups are the two groups. Hypothesis mu naught is that the mu1 is equal to mu2, that is the null hypothesis. मीन इसका मतलब ये है कि आपने जो फीड प्रोवाइड की उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ. एंड अदर इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस and the mu1 is not equal to mu2, and similarly mu2 has greater the outcome than the mu1, and this one is the research hypothesis, और इसको हम alternative hypothesis भी कहते हैं. ये एक रिसर्चर हाइपोथेसिस खुद बनाता है और इस हाइपोथेसिस की बेस पे वो आउटकम्स को इस टेस्ट के जरिए एनालाइज करता है. सो दिस वन इज द टेस्ट स्टैटिक्स. दिस इज द फॉर्मूला. हाउ कैन यू फाइंड द टी वैल्यू? y bar a first form, and then b form the second form, cattle form, and the SP is the variance of the population, and 1 over n1, 1 over n2. सबसे पहले आपको SP फाइंड आउट करना है. SP फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है. इसमें आपने डाटे के मुताबिक वैल्यूज पुट की तो ये वाली वैल्यू आई 0.545. So this value you can put this in this formula, and you need then you get that the t is equal to minus 7.362. So this is the calculated values, minus 7.362. अब decision क्या है कि table value, how can you find out the table value? Reject H naught if T that is the calculated value is greater than the T alpha, and N is the total number of sample. So in case of the negative, this sign will be reversed, and alpha value is 0.05. So in this table you can find out the value, this 30. In the column of 0.05 you need to get you can get the value that 2.042, and similarly for 40 you can get the 2.021, and you can subtract from these two, then you can get this value. अब आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये 38 है. तो 38 mean you cannot get the value directly from the table for 38. So therefore it is the method you need to find out this value. So you can difference between two values, then you can divide it by this difference and then multiply 8. How you can multiply this 8? Actually इसमें 30 or 40 or 30 mean difference. If you can get the difference or the above value of the 30, that is the 8. So you can multiply with 8 and you get this value 0.0168. So this is the table value. So now you can see in this
decision rule formula, and you can see that according to this formula the H naught is rejected. So how can you get the conclusion from this rejection of the H naught? आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि both Russians are effective for enhancing the milk production, और इस सूरत में अब one researcher जो है how can he decides how can he decide that which ration is the best for the production of the milk. So 95% confidence interval for the difference between the two milk production ration. So for the two population mean alpha is divided by 2, and this is the formula, and you can put the values in this formula and you can get these value, और एंड आप इस इन वैल्यू से आप देख सकते हैं कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बी वैल्यू है वो ए से ग्रेटर, सो द राशन बी इज द बेटर देन द राशन ए फॉर मिल्क प्रोडक्शन. सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. और अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, you can put the query or any question in my channel and I will also give the response at a reasonable time. Okay, thank you so much.